Yes, ma'am. जी आ रही है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, it's great. So we all are ready and prepared for the test, right? जी Yes, इंशाल्लाह। ma'am. चैलेंजिंग स्टेज है। अच्छा जी, आज दो एक चीजें आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये वाली अबाउट योर टेस्ट। हमारे पास ये भी है कि जो हमारे अभी के कुछ पार्टिसिपेंट्स, जो अब वाला बैच हमारा बैच 2 है, वो लोग भी हैं और हमने उनको खुद ही इनवाइट किया है। उसकी वजह ये है कि आप लोग आज की जो प्रेजेंटेशंस होंगी ना, उनमें से आपको लर्निंग होगी, आप सीखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह अपकमिंग जो डेज हैं उनमें टॉपिक सारे डिफरेंट होंगे। सेम टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि सेम आप जैसे जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वही आज जैसे आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वही वाली प्रेजेंटेशन नेक्स्ट बैच भी दे रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा। थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट यस ऑब्वियसली आप लोगों ने भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह प्रिपेयर करना है। तो आज के इस वाले सेशन में आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस होंगी एज एन ऑडियंस, क्योंकि इसमें हम इनवाइट करते होते हैं ऑडियंस को भी, और आज की जो बेस्ट प्रेजेंटेशंस होंगी उनके ऊपर भी हम फिर जो है श्योरली मार्क्स तो है ही हैं, लेकिन सिलेक्शन भी होगी। फिर ये लोग जो होंगे, ये आपकी प्रेजेंटेशंस जो नया बैच होगा उसमें आएंगे एज ए ऑडियंस, और आपकी मार्किंग भी करेंगे साथ। तो ये सारी जो है आज का एक प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली सॉरी सेकेंडली हमने किस तरह से करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देती हूँ कि आज जो इंशाल्लाह ताला हम इसको टेस्ट पे जाएंगे तो उसमें हमने कैसे करना है। आपके पास एक मैं लिंक दूंगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एवरीवन हैज़ टू स्टे बैक ऑब्वियसली। आप ट्राई करना चाहेंगे, अगर टेस्ट का जो मैं लिंक दूंगी तो कोई इशू नहीं है, बट ऑब्वियसली बैच नंबर स्पेसिफिकली देंगे, अटेंडेंस मैटर करती है, ज़ाहिर डाटा होता है बैकअप का। उसके बाद वो जो चीज़ें होती हैं वो उसके साथ सिंक करती हैं और लिंक अप करती हैं। तो टेस्ट का पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन शेयर की हुई हैं। आप में से वो लोग जो कि आज स्क्रीन पे शेयर करना चाह रहे होंगे, दे आर ऑल्सो अलाउड टू डू दैट। अदरवाइज आपने और कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ ये करना होगा कि आपने जो प्रेजेंटेशन अपने स्पीकर्स की बनाई है, ये मैं पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड जो प्रेजेंटेशंस है ना, जो हमने स्पीकर्स के लिए बनाई थी, वो प्रेजेंटेशंस मोस्टली सबकी आपकी मुझे मिल गई हुई हैं। बाकी जिन लोगों की रहती हैं वो मैं सवाल को जो भेज देंगे तो वो भी मुझे मिल जाएंगी, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट में मुझे यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस जो है ना चैट में दे दें। और अगर वो थोड़ी हैवी फाइल है तो कोई इशू नहीं है, सवाल को दे दें, वो मुझे अभी थोड़ी देर में दे देंगी। अच्छा, अब एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड जो है ना वो ये है कि आपको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आपके चैट बॉक्स में, और उससे आपने क्या करना है कि यू हैव टू कंप्लीट दैट टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसका जो टाइम है वो आपके पास 30 मिनट्स होगा, एंड यू टेक अराउंड 30 मिनट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिफोर 30 मिनट्स इसको कंप्लीट कर लेंगे। द मोमेंट यू आर डन विद योर टेस्ट आप लिखेंगे डन, और आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, इज दिस ऑल क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन तो नहीं है कोई? पैटर्न Yes, समझ ma'am. टेस्ट करना मैम सबको? पूछना ये चाह रहे थे कि प्रेजेंटेशन यानी कि हमने वो डेमो दे दिखाना है, प्रेजेंट करके दिखाना है, जी तो जी 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 जी, प्रेजेंटेशन हमने रेडी की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो इकरा आपने बनाई हुई है वो ओके आप, मैम, ओके। हाँ जी बिल्कुल पढ़ के दिखा देनी है। और आप ठीक लोग ठीक स्क्रीन है मैम, शेयरिंग भी सही। अलाउ है। अगर आपने स्क्रीन पे शेयर करना हो अपना प्रेजेंटेशन को अभी, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बट मेनली आप अपने टॉपिक के बारे में बता देना है कि मेरा टॉपिक ये है और हम अपने टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो विद इट। तो अब सारों को क्लैरिटी हो गई है क्वेश्चन की ना? कोई एक थोड़ी सी एम्बिगिटी तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं किसी ने? मैं पूछ लेती हूँ। इकरा ने बता दिया, इकरा हसन भी हैं, और नाइला आपको क्लैरिटी है, सुल्ताना आपको समझ में आ गई है? यस मैम, यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। बिल्कुल मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने लास्ट नाइट मैम नवाल को अपनी प्रेजेंटेशन सेंड की थी, हाँ बट जी जी मे जी, बी वो बिजी हैं, बिल्कुल तो उन्होंने जी। अभी तक शायद मैसेज सीन नहीं किया। आपको मिली है प्रेजेंटेशन? मुझे आपकी प्रेजेंटेशन मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे रात तक उन्होंने काफ़ी सारी भेज दी थी, बट इट्स ओके। अगर वो आप इन दैट केस नहीं भी होगी ना, तो आप अभी प्रेजेंट कर लेंगी ना, तो उसमें फिर आप बता देंगी मुझे, देन आई विल बी एबल टू डू। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना इसके अंदर वो ये होगी कि आप लोग अपनी जो प्रेजेंटेशन जैसे मुझे डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं ना, हमारा थैंक यू, आपकी मिल गई है मुझे। अब पहला स्टेप जो है ना हमारा, वो हम ये करने लगे हैं अपना टेस्ट ऑनलाइन जो हमने करना है। ठीक है,
ये मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, जब आप ये करेंगे ना। अच्छा, इस वाले टेस्ट में जो आप कर रहे हैं ये सॉरी, ये जो मैंने अभी आपको लिंक दिया है, इसमें ये है कि आपके पास ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन है जिसमें आपने अपनी प्रेजेंटेशन के स्पीकर का नाम देना है। आप इस पहले फॉर्म को ओपन कर लें जो आपका टेस्ट है, ताकि आप सबको कंफर्मेशन भी हो जाए, पता भी चल जाए। इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स है। 30 to 40 मिनट्स चलें, ले लें, कोई बात नहीं। बट मेनली इट इज़ डिज़ाइन फॉर 30 मिनट्स, ताकि जो बाकी का टाइम है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन दें। ईच पर्सन विल गेट अराउंड 3 minutes टू प्रेजेंट द टॉपिक। और फिर उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है ना अपना इसको टेस्ट पहले कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे, जो आपको मैंने लिंक दिया है, उसके फौरन बाद ही आप लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो शुरू कर देंगे। इन द मीनवाइल मैं आपकी प्रेजेंटेशंस अपने पास ऑब्वियसली सेव भी कर रही हूँ। और उसके साथ अगर किसी की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी तो दैट आई विल डू फॉर यू। ठीक हो गया जी? अच्छा, एक और चीज़ आपको मैंने सिखानी थी, पिछली दफ़ा मेरे जहन में था, बट वो समहाउ मैंने सोचा था कि चलें अभी पहली दफ़ा मैं कर दूंगी बाद में। आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन या अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो हमेशा याद रखें उसको अपने नाम से रीनेम कर लिया करें हमेशा। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अभी जैसे आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं तो किसी का नाम, किसी का है ना फाइनल प्रेजेंटेशन या कुछ भी ऐसे, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप अपने नेम से करें। अभी जैसे आपने इसके टॉपिक्स बड़े अच्छे रखे हैं, लेकिन ऑलवेज पुट सेव इट विद योर नेम। जैसे फाइनल प्रेजेंटेशन और आगे नाम आ जाए, आप जो भी आप जिसका भी है, आमना का है तो आमना का नाम आ जाए, हमाद आपका है तो आपका नाम आ जाए। अभी जैसे हमाद ने जो आपने जो मुझे भेजी है, हमाद उसमें आ रहा है मेरे पास ना फाइनल प्रेजेंटेशन फॉर दिस, तो उसको रीनेम हमने करना है। आमना आपका आ रहा है स्पॉटलाइट वाला, या कोई भी, सबका ठीक है, प्रेजेंटेशन इज नॉट रॉन्ग, बट ऑलवेज रीनेम इट। तो अभी के लिए जो, हाँ अभी जैसे आपने लिखा है बाय आमना अली, दैट्स फाइन, वो ठीक है। बाकी मेरे पास आमना अली की आ गई। बाकी आप लोग भी सब ना इधर मुझे अपलोड करते जाएं प्रेजेंटेशन अपनी साथ साथ। अच्छा, अब जरा लिंक को चेक कर लें प्लीज। आर यू ऑल एबल टू ओपन दिस लिंक? Okay, ma'am. यस मैम, चलें, ग्रेट ग्रेट। लिंक ओपन हो रहा है। बस ठीक है, आप उसको कंप्लीट करें अपने टेस्ट को साथ Ma'am, साथ। ma'am, how are you feeling now? You did not take the last class because you were not well, and I थैंक hope यू। you are feeling better today. यस नाइला, अल्हम्दुलिल्लाह बेटर, बट अगर आवाज से आपको अंदाजा हो भी रहा होगा, बस वो थोड़ा ज्यादा ही तबीयत नहीं सही हुई, ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गई। बट ये है कि Oh, इंशाल्लाह इट टेक्स टाइम, यू नो, क्योंकि गला जो होता है ना वो, और फीवर जो होता है वो फिर टाइम ले ही जाता है। okay. Get well soon. थैंक जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू नाइला। इकरा ये सुल्तान भी हैंडल मुझे मिल गई है। अभी मैं जी आपकी सबकी रीनेम कर ली है, लेकिन आप लोगों ने अगली दफा से ना ये याद रखना है कि आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है रीनेम करनी है। मुझे मिल गई है जी आप मैम, लोग, यस ग्रेट हो गया, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू हमाद, बट आई सेव्ड इट दैट वे। बहुत अच्छा है कि आप अपने पास सेव कर रहे हैं, तो इसको रीनेम कर लें। अच्छा सुलेमान, मैं लिंक दोबारा शेयर कर देती हूँ। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, वो आपकी जो प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी ना, वो आपके लिए बहुत जो है हो रही। हम जरा चेक कर लें, आई गेस फ्यू पीपल आर देयर इन द वेटिंग रूम आल्सो। मैंने लिंक दोबारा से भी शेयर कर दी आपको फॉर सोनिया जहांगीर एंड सुंदस। आई हैव शेयर्ड द लिंक अगेन। चलें, you have 30 minutes time to complete this test, but no worries, even if takes you another 2-3 minutes, so it's fine। लेकिन बहुत समझ के सोच के एक एक अपना वो करें ताकि इजी हो जाए। और जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी तो मैं आपको शेयरिंग स्क्रीन बता दूंगी, जो करना चाहे कर सकता है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है।
I'm here only. I'm just resharing the screen. Don't worry. इसमें जो सबसे अच्छी पार्ट रहेगा ना सबका, वो ये रहेगा कि जब आप प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे होते हैं तो इट मेक्स अ डिफरेंस वाइल यू प्रेजेंट, जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल, और वो लोग जो कि सुन रहे होते हैं एज एन ऑडियंस, क्योंकि पैनलिस्ट के पर्सपेक्टिव पे या उसको सुनने के पर्सपेक्टिव पे ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपको अभी इकरा ऐसा दोबारा से भी सेंड करें लिंक। Hamad, you can continue with your test. I am adding people in the meanwhile. ठीक है? Thank you. No problem. I'm looking at it. Let me put the screen on share. अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? वन से मुझे पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है। Should I make you host? No, that's not the requirement. Even with co-host, I can enter them. Yes, I know. But you're saying that you're Yeah. not able to see the participant. That's why. नहीं, वो पता नहीं, that was only because of another thing which has Okay, happened. no. No. No problem. आप कंटिन्यू करो अपना टेस्ट आराम से। हाईलाइट अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद कि किस दिन स्टार्ट हुआ था कोर्स? कोई इशू नहीं है, आपने उसको अपनी मंथ दे सकते हैं उसके अंदर। डेट का तो है, आज माशाल्लाह हमारे पास 45 पार्टिसिपेंट्स हैं सारे। मैं जी वही देख रही थी कि नए और सब लोग हैं, तो दैट इज इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने 5 अप्रैल को 5 मार्च को हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये, और आप लोगों का उसका कंसेक्यूटिव डेज पर है, रमजान थे में है, वो डेट्स हमारे पास होती हैं, दैट्स नॉट एन इशू, बट वी जस्ट वांट बिकॉज ऑफ दैट।
अच्छा जी, हमारा जो बैच 2 है उसमें आप लोग जो है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, तो आप ऐसे करें कि वो वाला क्वेश्चन बैच 2 के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट। ठीक है, तो आप लोग, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट बैच 1 का है, लेकिन आप लोगों की इनवाइट इसलिए है कि आप प्रेजेंटेशंस देखें जो इन लोगों ने आज करनी है इंशाल्लाह ताला। तो इन द मीन वाइल आप चैट में अपने ये आंसर्स मुझे भेजें, so that you can come have this one, because obviously आपकी एक्टिविटी अपनी आज जो है वो ये वाली, बाकी आपने प्रेजेंटेशंस देखनी है और ऑब्जर्व करनी है, पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं एवेल्युएशंस के साथ साथ जो है ना पॉइंट्स की बताती रहूंगी। अच्छा, वेरी नाइस, मुझे रिस्पॉन्सेज आने भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है वो मुझे मिल भी गया। किसने कंप्लीट किया है ये? ओके, ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम मैम। मोमना ने अपना टेस्ट सबमिट किया। जी, वालेकुम अस्सलाम। सुंदर। मैम मैम यहाँ पर एक है जिसमें दो ठीक है, दो ऑप्शन ठीक है, तो वो क्या करूं? दोनों इसमें ठीक है दोनों ठीक है ना, तो जो जी। मोस्ट नियरेस्ट आपको ठीक लगता है ना, आप बस एक वो पिक करें। दो देते होते हैं, मैं देती हूँ ठीक। इंटेंशनली ताकि पता चले कैसे भला वो ओके करते हैं। ओके मोमना ओके। अर्शद ने कर लिया। मोमना, आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है? मोमना अर्शद, इज योर प्रेजेंटेशन रेडी? अच्छा, लेकिन क्या वजह है उसकी? आप ग्रुप 2 में फिर कंटिन्यू कर रही हैं बैच 2 को? अच्छा, बस ठीक है, देन यू नीड नॉट टू अपीयर इन दिस टेस्ट आल्सो। ठीक है, कोई इशू नहीं। आप ये अपना बैच 2 है ना आपका, तो आप बस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दें जो मैंने आपके लिए मेंशन किया। हाँ, मुझे याद है अच्छे से, जब भी मैं नोटिस भी करी थी कि आपने ना उस मुझे आगे। ठीक है, आप बैच 2 वाला जो क्वेश्चन है ना, आप उसे अटेंड। नो प्रॉब्लम। अब्दुल हनान, आपका भी मुझे मिल गया है रिस्पॉन्स। अब्दुल हनान, व्हाट अबाउट योर प्रेजेंटेशन? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, सैयद मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। जी 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 अ, सर। मैं- जी अ, मैडम कैसी आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बस जी, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं वो अभी आपने फॉर्म जो फिल किया था, सेंड किया, वो फिल कर रहा हूँ, तो उसमें वो प्रेजेंटेशन का मतलब टीचर का नाम आ रहा हाँ, है, तो फिल आप कर। बैच 2 है ना? आप ऊपर जी देखें जी। ना शाह साहब, आप बैच 2 है ना? आप हो गए, और मोमना अरशद, आप लोगों ने चैट में जो क्वेश्चन बैच 2 के स्टूडेंट्स के लिए ना, वो मैंने शुरू में बताया था। जी जी। ये सिर्फ बैच 2 के लिए, बैच 1 का है, क्योंकि बैच 1 की प्रेजेंटेशंस आप लोगों ने देखनी है। बैच 2 ने आपको मैंने इनवाइट ही आज इसलिए किया हुआ है। जी जी। उनकी करेक्शंस करोगी तो आपको पता चलेगा। दूसरा ये है कि जो अ, बैच 1 है ना, आप बैच 2 हैं, आप सेकंड बैच जी हैं, जी बैच बिल्कुल। 1 हो रहा है ना ये। तो वो मैडम, तो वैसे अगर फॉर्म फिल करना है तो आपके नाम से सबमिट करना है हमें? हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो तो मेरे पास ही आएगा ना, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है ना आपको। आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे दें जो मैंने ऊपर दिया ना बैच के लिए। आप ये चैट में इसको रिप्लाई करें जब तक ये लोग कंप्लीट कर। ठीक है, आमना आपका जी मिल जी गया। आमना, अपनी प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर सकती हैं आप। यस, डन। आमना, वुड यू लाइक टू शेयर द स्क्रीन, या मैं आपकी आपकी प्रेजेंटेशन शेयर करूं? हम ऐसे करते हैं, हम बस 5 मिनट्स और वेट करते हैं, आप रेडी हो, और हम इंशाल्लाह ताला ना नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप अपनी मतलब आपको मैं टाइम बता देती हूँ। 12:50 पे आप अपना प्रेजेंटेशन जो है ना वो स्टार्ट कर लें, आपके पास 9 मिनट्स हैं। आप उसको गो थ्रू कर लें, और अगर स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी बता दें, नहीं तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर। ठीक हो गया? आमना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आमना, माइक को सेट कर लें,
अपना माइक एक दफा मैम सेट कर ले, नाउ इट्स बेटर. या बेटर से भी ज्यादा Okay. बेटर. I'm saying you will share the screen of my presentation. Yes, yes, I will do that. बस you have 10, हम 12 Okay. 50 पे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. Okay, ma'am. Thank you so much. नो प्रॉब्लम. अच्छा हादिया बिलाल, आपका भी आ गया मेरे पास. हादिया, आपने प्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट की हुई है? हादिया बिलाल. आप बैच 2 है ना हादिया? हाँ हादिया, तो आप तो हैं बैच 2 ना. आपने कोई जरूरत भी नहीं थी करने की वैसे, लेकिन अच्छा है, आपने अटेम्प्ट कर लिया. आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर, ऊपर जो मैंने बैच 2 का क्वेश्चन दिया ना, आप उसका आंसर लिखिए. क्योंकि आप लोग जो बैच 2 हैं, आप लोग को मैंने शुरू में अनाउंस किया था ना कि आप लोग बैच 2 हैं, तो आप स्पेसिफिकली बस वही करेंगे ना जो बैच. ये प्रेजेंटेशन जब आपका एंड होगा कोर्स तब होगी. मेमूना, आप भी बैच 2 है ना? यस मैम, बैच 1. अच्छा, आपने प्रेजेंटेशन आपकी वजह मिली तो नहीं है? आपने प्रेजेंटेशन नहीं? मैम मैंने बोला शायद अभी प्रेजेंट करिए, इसलिए मैं सेंड नहीं की है. मैं अभी कर देती हूँ. अच्छा, कोई बात नहीं. आप प्रेजेंट करेंगी तो मुझे यहाँ आप कर लेंगी स्क्रीन शेयर? आप लैपटॉप पे हैं? कैन यू शेयर द स्क्रीन? फिर सेकंड आपकी होगी टर्न, आमना के बाद. ओके मैम. आप आपने करनी है स्क्रीन शेयर या आपके लिए मैं कर दूं? अगर मुझे भेजनी है तो मैं कर दूंगी स्क्रीन शेयर, कोई इशू नहीं है. ओके, मैं आपको शेयर कर देती हूँ. आप कर दें, मैं आपके लिए स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी. चलें जी, वी आर गेटिंग रेडी फॉर आमना's presentation which I am bringing on the screen for you. और आमना लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन 12:50 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगी. बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी बस अपना टेस्ट कंप्लीट कर लें ताकि हम इसे टाइमली ख़त्म करें. कायनात, आपकी प्रेजेंटेशन. मैम मैंने बनाई तो है, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की. आप अभी अभी इधर शेयर कर लें मुझे. और आप इस तरह कर लें कि अभी आपने प्रेजेंट करनी है तो आप अपने से शेयर करेंगी, मुझे भेजेंगी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूं, जो भी आपको सही लगे. अच्छा जी, अभी मैं प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो कि आमना ने बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी. और वेरी नाइस, माशाल्लाह, ग्रेट. चलें, बस अब हम आमना के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं. आमना ने लोगो भी बहुत अच्छा लगाया. वेरी नाइस. बस आमना 5 मिनट है, मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन क्लिक करूंगी, बट यू हैव 5 minutes, डोंट राइट? Okay, ma'am. Sure. अच्छा जी, अब हमारे पास सीक्वेंस ये है कि पहली प्रेजेंटेशन जो है वो है आमना की. आमना के बाद अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. इकरा, हो गया आपका माशाल्लाह? मैम मैं कर रही थी और मेरा वो बैक पे सारा चला गया है. अब दोबारा से मुझे सारा करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, अच्छा है. अच्छा, मैं तो दोबारा कर लूँ मैम? आप उसको ना बाद में कर लें, बेशक आप प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाएं. अच्छा मेमुना, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, पता नहीं क्यों की हुई है. आप स्टॉप शेयर कर लें मेमुना, अभी आपकी तो टर्न है भी नहीं ना. अच्छा, तो अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको?
I'm repeating it again for everybody. This is not the presentation for the batch 2 students. तो आप लोगों को टेस्ट करना वैसे भी बनता ही नहीं है, मैंने शुरू में ही अनाउंस किया था। अगर आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, बट ये है कि आप लोगों ने देनी भी नहीं है प्रेजेंटेशन। अच्छा, फिर रीनेम नहीं किया, किसकी थी ये? कंप्यूटर्स वाली, एक सेकेंड। कायनात, कायनात बेटा जब आपने बनानी है ना, अपना नाम साथ में लिखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग विद आमना। बाकी लोग अपने टेस्ट जल्दी जल्दी सबमिट करके अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी करें और रेज हैंड कर लें। प्रेजेंटेशन वाले रेज हैंड कर लें जल्दी से, ताकि मैं यहीं से कॉल ऑन कर लूँ, जिसमें मैंने अभी सीक्वेंस बोला था। Ma'am, should I start? जी आमना, आप उसको स्टार्ट करें और बाकी लोग रेज हैंड कर लें। आप बिगिन करें प्रेजेंटेशन। चलें जी। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My good name is Amna Ali. I am the candidate of English business class at Z Professional Development Institute. Today, I am excited to be here to present my presentation. First of all, I really appreciate to my honorable trainer, Ma'am Mahin. As well, she provided us the opportunity to perform here. Today, my presentation is the spotlight of a great speaker, Muniba Mazari. I hope you all will find the information and it will be a more effective and engaging to all of us. Okay, now come on my first slide. Ma'am, kindly share the first slide. Sure. I'm sorry for that. Sorry. Okay, ma'am. Just a second. Okay, in Muniba, first can you- slides, I would like to introduce about the great speaker Muniba Mazari. Muniba Mazari, often referred to as Iron Lady of Pakistan, is a renowned Pakistani artist, motivational speaker, television host, model, singer, as well a human rights activist. She born on March 3rd, 1987. As well, she belonged to the tribe of Baloch Mazari. That's why her name belonged like the Mazari. In her introduction, I would like to elaborate the first thing, authenticity and her personal experiences. As we know about all the, she after the devastating accident, we know about she suffered a lot of in her car accident. She faced at the age of 21, Muniba experienced a car altering accident and left her the paralyzed. Despite of these immense challenges, she transformed herself for the adversity and the challenges. She never gave up. She always build up. She always gave the potential and grow up. As well, inspiring the princesses, despite all the physical challenges, Muniba exuded the strength and positivity, as we know about all. She chose to redefine herself. She recovered herself to discover the brand of creation. Muniba's journey is remarkable by the numerous groundbreaking achievement and her compiling a famous quote, "Don't die before your death." It's widely spread to encourage the audience. In my next slide, I would like to introduce overcoming the hardships. In it, there are some of the universal themes in which she always embodies the ideas of even and face the life-altering challenges and can rise up above the circumstances. She always grow up the inner strength and self-acceptance, a major message in her speeches and art, and embracing yourself as including the flaw and the scratch, as well trivializing the advocacy. She has the ability to recover herself quickly to lead up the women's rights. She advocates for the accessibility, dignity, and the equal opportunities. She became a symbol of the possibility for the marginalized group.
Her work resonates for the beyond Pakistan influence global narrative about strength and the beauty and the capabilities, empathy and the empowerment. Her talk are not self-centered. She aimed to uplift others, especially women. She always worked with it. Here I want to add the quote mentioning on the slide. When you accept the way you are, the world recognize you. You do whatever you want to do. You can do. So that's why she became the popular, a great speaker, and widely become a national ambassador of Pakistan UN Women in 2015. On next, I would like to describe the some of qualities of Muniba Mazari. Muniba Mazari qualities describe first thing is resilience. In resilience, we can see she has the ability to quickly recover herself. She never gave up. At the age of 21, Muniba faced a lot of tragedy, a trauma, and she transformed herself. Muniba began start painting during her recovery using art on canvas. Muniba canvas has been showcased in various exhibitions, including the international display in Dubai title and I Choose to Live. Because she was paralyzed, she can't do anything more, but she start painting. She display her creativity to the world. As well, creativity on the other hand, she started advocacy in the she served as the first female wheelchair TV host. Her compiling talk in Islamabad and brought the widespread recognition leading to her appointment as Pakistani first national ambassador for the UN Women 2015. In her edition, I would like to describe the qualities. She doesn't just speak to motivate, but she speaks to transform herself. It is all due to her the strong grip of communication tools such as 7CS. 7CS I will describe in my next slide. Here I want to describe the impact on audience. She built emotional connection. She built a strong emotional connection with their audience. Whenever audience listen to her, they feel deeply emotional response. Many are more tears because about listening their journey from tragedy and trauma. She always survives with the universal human experiences like pain, loss, healing, and hope. As well, she make a shift in perspective. Like she transformed herself how people views disability from piety to potential. It's mean we can say at the time of disable, she accept the sympathy of people to make herself potential. Number two, failure. From shame to growth. It's mean she didn't admire that she lost herself. It may be dependent on others. In fact, she started the journey, accept the phases of shame to grow up. Beauty, as we all know, she never gave up. She means Muniba never gave the more attention on her paralyzed body, but in actually she has the ability to recover herself quickly from illness, injury, and any mindset. Now there is a hope and positivity. Muniba always radiated the hope even though she faced unimaginable pain. She always smiled. Here I must add a quote. If she can smile through her pain, why can't I? Thi- Absolutely, I can do. This statement always make me so strong when I think if a Pakistani lady never lost her stamina, having the major disability, then definitely I can do. As well, now I would like to share the powerful lesson in communication skill from Muniba Mazari. In powerful communication skill, the first one is speak authentically. It's a very important aspect of the presentation of communication authenticity, build trust. The great speaker Muniba influenced me due to the truth. Audience always inspired and connected. They respond more than truth and then polish. We can say Muniba emphasizing to delivering only authentical and truthful factor of their real life. A good speaker attain the attention to share the real life story about their experiences.
Use silence and pause powerfully. This tool enhances the worth of your speech. By using chunk of silence can be impactful speech. It shows the confidence and give the weight to your message. Speak with purpose, not just to impress. Meaningless speech or meaningless communication can be a bad impact to your audience. A good speaker always delivers a meaningful message rather than to over the performance. Embrace the non-verbal communication is a part of a powerful communication skill. By Muniba Mazari, she adopted the non-verbal tools to become a great speaker. These are mentioning here. First one is facial expression. It's a very fundamental part how we communicate. Speaker smile indicate of happiness by smiling and bright eyes. The second thing, sadness. It used the downturn mouth, surprising moment. Speaker raise their eyebrows, wide eyes, fear, and open mouth. These are commonly used while you are expressing yourself in front of the audience. Second thing is gesture. Gesture is a powerful component of the nonverbal communication. It helping to convey the emotion, emphasizing the main point of the speech. Speaker can use the gesture like thumb up for the approval and hand waving for saying the hello, hi, and goodbye. The next one is eye contact. Eye contact convey the feeling of your happiness, sadness, anger, and surprising. As well, it convey the concentration and connection to eye contact. But it can vary widely depending on the cultural, social, and situational context. It shows the attention and interest. The fourth one we can add the active listening. According to Muniba Mazari, it is a practice of the fully concentration, understanding, responding, and remembering what is being said during the conversation. If we are talk about the active listening, we can say focus entirely on the speaker, avoid distraction like phone calls and the background noises, avoid the interpreting of offering immediate noise, as well let the speaker finish their point before responding. There are a lot of benefit of active listening. As we all know, it builds the trust, it prevents the misunderstanding, enhance the problem solving and collaboration, showing the empathy and the emotional intelligence. The last one is posture. By Muniba Mazari, it's mean how you hold your body. It affects the message you send and receive during interaction. It is a key of non-verbal communication. To enhance your posture, we can keep your shoulder relaxed but upright. Face the person you are speaking with directly. Use gesture that align with your words. Now, the most important part of my presentation is 7CS, a key of a communication. 7CS means it's a set of a principle and tool help to ensure effective communication. Muniba commonly used in communication to make messages clear, concise, and impactful. The first one is clarity. The part of 7CS first is clarity. Muniba speaks with clearly purpose to inspire and empower to their audience. She clearly communicates her journey from a car accident survivor to the motivational speaker. Her message about self-acceptance, resilience, and hope and always easy to understand. The second is conciseness. She avoids unnecessary complicated phrases, even when she are discussing too complex emotions like pain, trauma. She always brief and concise. She never gave up into the long terminology. Her famous quote, here I want to add, we are all perfectly imperfect, but that is perfectly all right. We know about the imperfection is but we have to committed with it. No, we never give up. The third is correctness. Muniba communicated with credibility and the authenticity. She always shares accurate
accounts of her real life experiences. Her language is grammatically correct and she never lie. She always tailor it to the suit diverse to their audience. The fourth one is completeness. She gave the complete context when she telling her stories in the platform of a public speaking. This completeness allow the audience so truly understand and connect with her their message. Concreteness, the fifth part of the 7 Cs is concreteness. She used real life stories, example, personal stories. It's mean when she describing her injury, surgeries, and the time of wheelchair, she make her message effective. Here I want to one thing more quote. I could not walk, I could not paint. So I started painting with my mouth. It's mean she speak with their mouth. She do a lot of things by using the speaking skills when she don't do by their body. The sixth part of the courtesy. It's mean while discussing his personal pain, she remained respectful and encouraging. She never blame or criticize other. Her tone is positive, inclusive, and inspiring to others. The last one, the 7 Cs is key of concentration. Her speech are well organized and flow logically. She typically begins with their story, build into the lesson learned, and will end into the message of a hope. Each part connects smoothly, making her message easy to follow up and impactful. So this is a great speaker, impactful, the final presentation of my Muniba Mazari. Hope you all got it well and you all encouraged and you got a good engagement as well the presentation skills. Muniba Mazari is not just a motivational or transformative. She the motive of her life to lift up the spirit for the women rights. As well, she reframe is his mindset, awakeness, empathy, call the pupil to rise up for making them individual differences, no matter their circumstances, how they face ahead in a life. Here, I here I mention one thing more quote. I don't know how my story will end, but nowhere in my text you will ever read, I gave up. Thank you so much. Thank you so much, Amna. It was very nicely prepared. So much of your efforts I can feel. And I'm very Thank you. glad that you could speak up so confidently, mashallah. Obviously, when the time will you will be presenting more. So aren't you feeling more confident and happy today? Yes, ma'am, I feel more confident, but here I want to say something. Uh, there is a lot of content about the Muniba Mazari, but due to the I shortage know. of time, according to the presentation limit, I Hmm. can't add more thing. No, So no, just I it give is my best. no, it is fine because you already have shared a lot. Obviously, this is how we could actually concise so much about one presenter we have, the speaker which we are speaking about. But obviously, because of the time bar which we have to keep, so we have to obviously make it shorter enough Yeah. so that we can do it within the. But for me, the main important thing is that you could speak up in front of so many people, and secondly, you Yeah. could come up with a nice presentation. You could concise it. It's no problem at all. And Thank you don't you so worry, much, guys. ma'am. You are most welcome. And obviously, there is always with practice, you will automatically be coming to know that I can do more. So you can do a lot, much more with the time. Also, you can keep in mind and with the presentation which you have already developed. Very nice. We will take you back one more time for Thank the you, ma'am, for next. acknowledging me. Yours is done. Yours is done. Very good. Excellent. Okay, Chalenji, ma'am. now we have got Naila Mushtaq, Ikra Hassan, Ikra. Just sorry to disrupt. Just want to add one thing. I'm unable to raise my hand, so No whenever problem. you're going to call me, Yes. I will be I will calling be able you. to. Don't you worry. Yes. And next we have got. Acha, now what we will be doing? Just give me 1 minute. Azan is going on at my backside.
Challenge. Now, next we have got in our row people who would be able to present in next 30 minutes is fine, and we will continue with these presentations in our next session. But yes, in next session we'll be having batch 2 lesson first, and after that we will be taking 5 presentations onwards, and that is for the next date only, which will be on the next session we will be having, inshallah, on, I will tell you the date, 22nd. On 22nd, we will have the remaining presentations after today's, and another 5 presentations till 1:30. That is, we will be having first from Ikra. Are you, Ikra Sultana, Ikra Hassan, are you ready? Naila, Maha, Hamad, and Sundar Tariq and Sultan. Are you guys all ready? Yes, we are. Yes, ma'am. Yes, So, ma'am. Naila, will you be sharing the screen? Naila Mushtaq. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, share the screen then. Hamad, आपको check करना पड़ेगा. You just have a look when she is sharing. Is she able to? मैम मैं मोबाइल से यूज कर रही हूँ, सो मेरी शायद शेयर ना हो पाए, तो आप कर दें. आपको मेरी मिल गई थी हाँ, आप present? मुझे चैट में भेज दें. नहीं, मुझे आपकी नहीं मिली. ओके मैम. अनिका ने भी भेज दी है. गुड, ठीक है, कोई इशू नहीं है. हम लोग ने सबकी करनी है, बट वी विल बी डूइंग टर्न बाय टर्न, और सबने प्रेजेंट करना ही है. तो आज हम आराम से बिल्कुल ठीक ठीक सबकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन करेंगे टिल 1:30. बाकी जिसकी रह जाएंगी वो भी करेंगे, बट वो फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड को करेंगे इंशाल्लाह. मैम और कोई बात नहीं. इकरा हसन आपका भी मैं कर लूंगी. आप मुझे भेजें अपनी नाइला. इन द मीन वाइल आई थिंक आप शुरू कर लें. हमाद कैन यू शेयर द स्क्रीन? Yes, I can. I was just about to say that. Let me start. मैम आप जी अनिका, आपकी मिल गई है मुझे. जी अनिका. मैं जो असाइनमेंट बनाई थी ना वो पावर पॉइंट पे बनाई थी, लेकिन अभी मैंने आपको शेयर की है तो ये वर्ड में कन्वर्ट हो गई है, तो मैंने मिस कोई नवाल बात को नहीं, कल शेयर कोई कर दी बात थी. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे ले लूंगी. अभी हम हमाद की प्रेजेंटेशन देखते हैं. इसके बाद इतनी देर में नाइला आप मुझे सेंड करें, बाकी सबकी मेरे पास हैं जो भी वाले लोग हैं ना. नाइला, आई एम वेटिंग फॉर योर्स. चलें हमाद, आप जल्दी से स्टार्ट करें ताकि हम फिर नेक्स्ट पे मूव कर लें. Sure. Can you see the screen? यस यस. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So we're going to discuss a topic that has been given to us: spotlight on the success, discover and decode a great speaker. So the speaker that I chose is Engineer Muhammad Ali Mirza. He's a Pakistani mechanical engineer and an Islamic scholar as well. The main reason why I chose him as an influencer or speaker is simply because he always encourages the people to seek सॉरी, guidance from. आई जस्ट हैव टू इंटरप्ट. इकरा, आपको भी स्टॉप कर लें शेयर को. 1 बाय 1 करना है ना. अभी आप शेयर ना करें क्योंकि हमाद की टेक ओवर होगी आपसे स्क्रीन. अभी आपको जब टर्न आएगी ना तब आपने शेयर करना है. जी हमाद, योर स्क्रीन वाज टेकन ओवर, वी कुडंट सी. अभी मैंने कर लिया उसको. ठीक, चले आप कंटिन्यू करें हमाद. Sure, is it okay? या इट इज विजिबल. Sure. Okay, so I was talking about the main reason why I chose him as an influencer or speaker is simply because he always encourages the people to seek guidance from Quran and Hadith. He also proves references from authentic Hadith and Quran to support his argument. Okay, if we talk about the key speaking qualities of him, there are multiple factors which make him unique from the traditional Islamic scholars, but I would like to list a few over here as well. He's a motivational and inspirational. He often interconnected in quotes and stories that uplift and inspire his audience, encouraging them to pursue their goals and overcome challenges. On the second hand, passionate and authentic. His speeches reflect a genuine passion for the topics he discusses, making his delivery feel authentic and heartfelt. Engaging and interactive. While he may be known for delivering lectures, he is also known for being able to engage with the audiences and create a sense of connection. Number 4 would be persuasive and convincing.
He presents his arguments and beliefs with such powerful conviction, making his speeches persuasive and engaging. On the fifth, knowledgeable and insightful. He is known for his insightful and knowledgeable presentations on various subjects. If we move forward and talk about his impact on audiences, he primarily connects with his audience through his YouTube channel and lectures on religious issues. He uses the platform to share his understanding of the Quran and Sunnah, aiming to promote Islamic principles and unity among Muslims. It is only because of him that most of the Muslims are questioning the traditional Islamic teachings from their respective ulmas and trying to find out the authenticity of any aspect through Quran and Hadith. That never happened before. If I have to give an example of his thoughts, I'm going to quote one of his famous slogans, which is, "No one in the world is like our Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, not even your elders." That's his famous quote or slogan, you could say. All right. So finally, if I had to draw some personal takeaways, I think one can learn in his unwavering commitment to spreading the true message of Islam, his extensive knowledge of the Quran and Hadith, and his dedication to research and intellectual discourse, which made him a highly respected figure, not only among the Muslims, but to the rest of the world as well. Also, his perseverance and unapologetic commitment towards the betterment of Muslims and towards the bigger goal of spreading the true picture of Islam globally. On the other hand, if you talk about his communication skills, I think we can use them in our daily routine to make ourselves better at it. For example, his way of engaging with the live public by making them at ease during using light humor in between his lectures, his way of taking a stand on his opinions, firm and upright by the help of facts and figures, which is very important, giving statements without being biased or judgmental towards anyone, a genuine passion in his every lecture towards his audience, and much more. All right, that's my presentation. I hope that all of you have a better understanding of him. I know that most of the people over here know him already, but that's pretty much it. My name is Ahmad, signing off. Allah Hafiz. Thank you so much, Ahmad. It was very nicely presented. Presentation is also very nicely done and very Thank well you. picked up. Surely a very good topic and very, very well shared. Thank you very much. It was Thank super you. nice. Very good. चलें जी, दो सुपर ग्रेट लोग आमना और हमाद की प्रेजेंटेशन हो गई है कंप्लीट. अब हम आगे जा रहे हैं. नाइला, आप अपना शेयर कर सकती हैं स्क्रीन, बिकॉज नवाल तो मैं भी चेक कर रही थी, उनके पास नहीं है प्रेजेंटेशन आपकी. तो आपने कैसे करना है फिर? अच्छा, इकरा एहसन, आपने शेयर किया था अपनी स्क्रीन को दो एक बार बीच में, तो अब आप करें स्क्रीन शेयर और जल्दी से फिर स्टार्ट करें. और इसके अलावा मुझे बताएं, नाइला, व्हाट अबाउट यू? आई वाज वेटिंग फॉर यू एक्चुअली, कि सेकंड टर्न आपकी थी ना. मैम मैं शेयर कर रही हूँ बट यहाँ से नहीं हो रही मैम. मिस नवाल को दोबारा से सेंड कर दूँ? आपने यहाँ पर मुझे ना अपलोड करनी होती है और स्क्रीन पे आपने शेयर कर सकती हैं. कोई बात नहीं, आप नवाल को दोबारा सेंड करें, इतनी देर में हम सुंदस की प्रेजेंटेशन करते हैं. One thing I सुंदस, want to add, I have opened the tool of multiple participants can share simultaneously. हाँ, So I think there should be no issue. होना तो नहीं नहीं चाहिए. नहीं, वो एक्चुअली उससे ये होता है कि वो 2-3 स्क्रीन शेयर हो जाती है ना, अभी जैसे Okay, इनके sure, साथ हो sure. रहा था. हाँ, दैट इज, यू हैव टू कीप इट सिंगल, इसीलिए वो हो रहा One था कि वो person, आपकी okay, प्रेजेंटेशन. I've done that. I've done that. हाँ, One बस बस, participant can share at a time. ठीक है, गुड गुड, दैट्स बेटर. अच्छा जी, नाउ वी आर कमिंग टू सुंदस तारिक. सुंदस, आपकी आ गई प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे, आप स्टार्ट कर लें. फिर इसके बाद सुल्तान आपकी है. हम 2 प्रेजेंटेशंस 3 और लेंगे टिल अनदर 10 मिनट्स. तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली प्रेजेंटेशंस जो हैं हम वो करेंगे नेक्स्ट 22 को. चलें जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम शुड आई स्टार्ट?
यस यस प्लीज। नाइला आपकी आ जाती है तो मैं इतनी देर में डाउनलोड करती हूँ नवाज से, ठीक है? ओके मैम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, respected teachers and my friends. My name is Sundes Tariq, and today I feel honored to present to you about a very inspiring personality, Mufti Ismail Meng. Mufti Ismail is a honored Islamic scholar and a motivational speaker who has touched millions of lives worldwide. His way of speaking combines deep Islamic knowledge with kindness, simplicity, and wisdom. I choose him as my topic because his speeches encourage us to be better human beings, closer to Allah, and full of hope and patience. Inshallah, by the end of this presentation, you will understand why Mufti Ismail is such a respected figure and what lessons we can learn from him. Let us begin with the first slide. Intro. Mufti Ismail Menk is not only a scholar but a guide and motivator who speaks on Islamic teaching, personal development, and peace. He has traveled to many countries and addressed audience from different cultures and background. What makes him special in his ability to explain complicated religious concepts in a very simple and peaceful manner. For example, instead of using difficult words or religious jargon, he used everyday language that everyone can relate to. I choose Mufti Menk because his talk made me feel calm and hopeful. His approach spread love and encouraged us to be kind to ourselves and others. And this is important in today's fast-paced and something harsh world. Now, slide 2, key speaking qualities. Now let's look at what makes Mufti Ismail such an effective speaker. One of his strongest qualities is clarity. He speaks clearly without rushing so that all listeners, whether young or old, from any country can understand him. He avoids using complex terms that may confuse the audience. Instead, he chooses simple, everyday words to explain his ideas. His body language is always calm and inviting. He smiles softly and uses gentle gestures, which makes people feel comfortable and connected. This calm demeanor shows respect to audience and creates a peaceful atmosphere during his talks. Mufti Ismail often shares stories and sometimes from his own life, sometimes from Islamic histories or daily life experience. These stories help illustrate his points and make the lesson easier to remember. For example, he might tell a story about patience during hardship to teach how important it is to trust Allah. And all these qualities together make his speeches engaging, meaningful, and memorable. Now, slide 3. Mufti Ismail has a unique ability to touch the hearts of the listeners. He speaks respectfully and kindly to everyone, no matter who they are or where they come from. His soft tone and humble attitude help create a strong connection with the audience. People often feel comforted and inspired after listening to him. And one of his famous quote is, "Don't let someone's bad behavior change your good heart." This is very powerful reminder to remain patient and kind even when others are rude and disrespectful. This message encourages us not to lose our goodness or become harsh because of others' negativity. It shows how Mufti Ismail teaches more than just knowledge. He teaches good characters and true Islamic value. Now, personal takeaway. Listening to Mufti Ismail has personally taught me many important lessons. The first lesson is how important it is to speak kindly. When we talk gently and respectfully, people listen more carefully and our words have a greater impact. The second lesson is the power of simplicity. Using simple words and examples help others understand better, especially when explaining complex topics. The third lesson is the value of storytelling. Real life stories and examples make ideas clear and easier to remember.
In my future presentation, teaching, or daily conversation, I will try to apply these lessons to speak with calmness, use simple language, and share relatable example. By doing this, I hope to communicate more effectively and inspire others, just like Mufti inspired us. Thank you so much, Sundar. It was great. Very nice. Done, right? थोड़ा सा end करना है बस बस end कर रही हूँ. Very To good. conclude, to conclude, Mufti's smile is a shining example of how knowledge, kindness, and humanity can come together to inspire millions. His peaceful style and meaningful words remind us all to live with love, patience, and faith. I hope this presentation has helped you understand why he is such an important figure and what value lesson we can learn from him. May we all try to follow his example in speaking kindly and living with good character. Thank you very much. Thank you so much, Sundar. And I was so happy to hear you in that way that, see, now the best thing all of you are doing is that the confidence, which I wanted actually you to speak in a public platform. और आप सबसे मजे की बात ये देखें कि आप लोग सब live हैं. And live means that you are actually addressing maybe 100,000, 500, 800,000 people at this time. कितना ज़्यादा pride है, माशाल्लाह. Super nice, very good. अच्छा जी, अब हम आगे चलने लगे हैं और अब 3 सुपर पीपल के बाद हमारे पास सुल्तान है. सुल्तान, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. सुल्तान के बाद इकरा सुल्ताना का आ जाएगा और फिर उसका आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है. इकरा हसन की भी थी, इकरा हसन ने अब ज्वाइन किया. चलें जी सुल्तान, आप श्योर श्योर, कोई बात नहीं, हम बस 1:30 तक देखते हैं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह 20 सेकंड जी. सुल्तान प्लीज बिगिन. यस मैम. जी करें स्टार्ट. I choose the speaker Qasim Ali Shah, inspiration leader. Speaker name is Qasim Ali Shah, background field, motivational speaker, author, and corporate trainer. Reason for choosing: now for his impactful life coaching, practical advice, and motivational talks that inspire personal growth and professional success. Clarity: use clear and simple words to ensure the message reaches the audience effectively. Body language: using physical gesture to connect with the audience and convey emotions more effectively. Storytelling: making message memorable through engaging stories that inspires and capture attention. Connected with the audience, Qasim Ali Shah concepts deeply with his audience by using real lives, example relatable stories, and a compassionate tone that builds trust and motivation. Memorable message or moment: one of his famous message, अपने आप पर यकीन रखो, छोटी छोटी जीतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं. This simple yet powerful message has inspired many to take the first step toward their goals. Question is what I learned. I learned that with clear and simple language, effective body language, and the art of storytelling are essential for becoming a powerful speaking. Applying these qualities, I use these qualities in my everybody conversation so my words can reach others more effectively and I can express my thoughts and emotions more clearly. Very nice, very good, Sultan. Excellent. I'm so impressed by your confidence and the way you have presented. A nice choice. सारे speakers तो जिसके जो favorites हैं सभी अच्छे हैं और आपने उसको Yes, बहुत ma'am. अच्छा present किया है. चलें जी, अब हमारे 4 बड़े powerful speakers के बाद हमारे पास इकरा सुल्ताना वेट कर रही हैं, उसवा वेट कर रही हैं. अच्छा नाइला, आपने अब नेक्स्ट में देनी है प्रेजेंटेशन? आपकी मुझे नहीं मिली अभी तक. क्या करना है फिर डिसाइड करें. अच्छा इकरा मैम सुल्ताना, आप
मैंने लिंक सेंड की है आपको, वो अमाद भाई को बोला है कि आप चेक करें ओपन हो रहा है, और मिस नवाल को भी मैंने अगेन सेंड कर दी है। जी अच्छा, यहाँ चलें से अब क्या लिंक तो ओपन हो रहा है, बट ये आपके पास लिंक के फॉर्म में है ना, ये पावर पॉइंट डाउनलोड नहीं हुआ हुआ, शायद इस वजह से शेयर नहीं हो रहा। मैं चेक कर रही इसको हूँ। हम आज चेक करें, अगर ये आपके पास ओपन हो जाता है ना तो आप इसको स्क्रीन पे ले आए। इतनी देर में हम लोग जल्दी से एक प्रेजेंटेशन और कर लेते हैं। इकरा सुल्ताना, आपकी स्क्रीन शेयर होगी या मैं कर दूं? मैम मेरे पास मोबाइल है, मुझे वैसे कुछ आइडिया नहीं कोई है, अगर इशू आप कर दें तो। मैं कर रही हूँ। चलें जी, इकरा आप जल्दी से स्टार्ट कर लें। आपकी 4 है ना, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलें, ग्रेट, चलें जी स्टार्ट Thank you, करेंगे। ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Ikra Sultana, and I am very happy to give the presentation today. I am going to talk about a very famous and inspiring person, Dr. Javed Iqbal. He is not only a medical doctor, but also a motivational speaker and educator. He has inspired thousands of people with his speeches, especially young students and professionals. He talks about real life human emotions and how we can improve ourselves. Slide 2. Yes. Now let's see what makes Dr. Javed Iqbal so special. First, he speaks from the heart. He shares his own personal stories, which make his talks very real and powerful. And second, his speeches have a clear structure. He starts with an introduction, then talks about the problem, give insight, and end with a solution or message. He also knows how to connect emotionally with people. His voice, tone, and facial expressions help the audience feel what he is saying. At the end of his talk, he always gives a strong message that people remember for a long time. And connecting with audience, Dr. Javed Iqbal knows how to build a connection with his audience. He talks about common problems that people face in daily lives, like stress, fear of failure, or not knowing what to do in life. He uses hormones and emotion to make people feel comfortable. He often speaks in both Urdu and English so that more people can understand and relate to him. He also asks questions and interacts with the audience, which make his talk more interesting. And I have learned many things from Dr. Iqbal. The most important lesson is to be honest and real. When we speak, we don't have to act perfect. We just have to be ourselves. He also taught me to be strong and positive when facing difficulties. Life is not always easy, but we can grow by learning from challenges. Another lesson is the power of self-reflection. He always reminds us to look at ourselves, understand our thoughts, and try to improve daily. One of the quotes that I really love is, change starts from within. Speak to inspire, not impress. And I have kept this presentation simple and clean, just like Dr. Iqbal's way to speaking. I used the simple writing because the slides also include the visual that is understanding. And Dr. Javed Iqbal is a great example to how one person can inspire many others just by speaking from the heart. He teaches us that we all have the power to bring positive change in ourselves and in others. Thank you so much for listening to my presentation.
Thank you Thank you, so ma'am. much, Ikra, for a very good presentation. Very nice, mashallah. And I'm so happy, so glad, and so proud of you all. So we had wonderful Thank you. presentations today, mashallah. And those who have to, because obviously we had to have these in 2 parts. So the next part will be only presentations on 22nd of May, inshallah ta'ala. Not in the next session. Yes, And ma'am. like obviously next class will be likely on Monday. Or So not on that day, but the next will be on 22nd. But very nicely presented, very good all of you, those who have presented. और आपको पता है सबसे मजे की और सबसे अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह देखें आज आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी बोलते बोलते ना थोड़े थोड़े से शाये होते थे शुरू में, और आज माशाल्लाह आप लोगों ने पता नहीं कितने 1000 लोगों को अपनी स्पीच रिकॉर्ड कराई है, और उस सब ने देख रहे होंगे जो कि लाइव यूट्यूब पे आपको देख रहे होंगे, और आप इसी लिंक में जो है उसको अपने लोगों को बता भी सकते हैं कि देखें जी मेरी ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, एक्सपीडिया यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसे देखते हैं। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो मेरे साथ HR की नेक्स्ट क्लास में है वो वहाँ पे मिलते हैं, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बैच 2 हम कनेक्ट होंगे, और बैच 1 आपकी प्रेजेंटेशंस कंटिन्यूएशन में है। उसवा की इकरा, एहसन, नाइला, आप अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दोबारा से भेज दें, कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने इसको 2 बैचेस में करना ही था। आप सबकी प्रेजेंटेशन, और इकरा आपकी वैसे थोड़ी सी मैंने मौलाना तारिक जमील वाली देख भी ली थी जो आप शेयर कर रही थी, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, वो भी आपने प्रेजेंट एक्सक्यूज मी करनी है। मैम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। मुझे ना हाँ वो आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं उसको कोई बात मार्क नहीं, प्रेजेंट करे थे और मैं शेयर नहीं करती बेटा, जा रही थी, और फिर आई नो मीनवाइल आई मेरी नो, लाइट चली गई। तो कोई बात मैं मेरी बिल्कुल रेडी थी और मैं बहुत जज्बे के साथ थी कि मैं अभी आज ही दूंगी। हाँ नहीं नहीं, लेकिन क्यों नहीं, इंशाल्लाह नहीं दे इंशाल्लाह, सकी, और मुझे बिल्कुल क्यों नहीं, बाद में एहसास हुआ बिल्कुल कि है। मैंने हमाद भाई को बहुत ज्यादा तंग किया अपनी स्क्रीन शेयर करके। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं, वो मैं देख, ये होता है ना इकरा, इसमें क्या है। और मैं भी इसीलिए आपकी जल्दी में भी नहीं करवाना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है हमारा टाइम उस पे है, ये बहुत एफर्ट होती है, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, अब आप लोगों को खुद भी अंदाजा हो रहा है कि कितने एफर्ट से जी आप एक जी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और ऐसे जल्दी जल्दी में भाग के नहीं, हम इंशाल्लाह फुल फ्लेज इसको करते हैं 22nd को। और आप लोग ओके मैम। माशाल्लाह इसी तरह अपनी प्रेजेंटेशंस रखें जिस तरह आपने बनाई हुई है, बहुत अच्छी। और जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उसमें बस आप रेडी रखें। सबसे अच्छा ये है कि हम यहीं पर आप मुझे अपलोड करते जाएं, जैसे मैंने आज स्क्रीन शेयर की थी, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लूंगी और हम इसको सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, डन हो गया। ठीक। चलें, जो लोग HR में ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट वहां मिलते हैं, और सुपर ऑसम आप लोगों ने ना, आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ यू गाइस, माशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट क्लास, दोज हु आर देयर। और बैच 2 आप लोगों का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्लास में होगा, जो आपका टाइम टेबल है। और जो बैच 1 है जिसकी प्रेजेंटेशंस हैं वो करेंगे हम कब, 22nd को इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you, Miss. अल्लाह हाफिज।